अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आई एम मोहम्मद सईद। आज हम खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का यूनिट 4 जिसका नाम है डैफोडिल्स उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे। ये स्टूडेंट्स याद रखें, ये एसएलओ बेस्ड सॉल्व एक्सरसाइज है। चले बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले है कम्प्रीहेंशन। ए, रीड आउट द टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपने टेक्स्ट को पढ़ना है और आपने सवालात के जवाबात देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर एनी पर्सनिफिकेशन इन दिस पोएम? इफ यस, वेयर? क्या इस नज्म में कोई पर्सनिफिकेशन है? अगर है तो कहाँ? पहले समझ लेते हैं पर्सनिफिकेशन क्या है। पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स और abstract concepts are given human like qualities और एट्रीब्यूट्स। पर्सनिफिकेशन ये फिगर ऑफ स्पीच है और जिसमें गैर इंसानी चीजों को इंसानी खूबियां दी जाती हैं, जो आप देख लेते हैं। Yes, there is personification in the poem. In the line, the wave beside them danced, but the poet gives human-like qualities to waves by suggesting that they are dancing. Next question है, write at least two lines showing similes. सिमिली तशबीह को कहते हैं। सिमिलीज क्या है? सिमिलीज इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स। अनलाइक यानी डिफरेंट थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। आंसर है टू लाइन्स शोइंग सिमिलीज आर। वो कौन सी दो लाइनें हैं? आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड, दिस कंपेयर्स द पोएट्स स्टेट ऑफ लोनलीनेस टू वंडरिंग क्लाउड। और बी है continuous as the stars that shine. This compares the never ending line of daffodils to the continuous shining of stars. यानी ए में वो कहता है कि मैं बादल की तरह तन्हा भटकता रहा, ये शायर की तन्हाई की हालत का आवारा बादल से मुवाजना करता है। और बी में मुसलसल चमकने वाले सितारों की तरह ये डैफोडिल्स की कभी न खत्म होने वाली लाइन का सितारों की मुसलसल चमक से मुवाजना करता है। थर्ड है, व्हाट डज द वर्ड क्राउड एग्जैक्टली मीन? लफ्ज हजूम का असल मतलब क्या है? द वर्ड क्राउड इन द पोएम रेफर्स टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ थिंग्स और पीपल गैदर टुगेदर इन वन प्लेस। हियर इट डिस्क्राइब्स द गैदरिंग ऑफ golden daffodils by the lake. Question 4 है, why does the poet compare himself to a cloud? शायर अपना मवाजना बादल से क्यों करता है? The poet compares himself to a cloud to emphasize his sense of solitude and the feeling of being disconnected from others, much like a cloud drifting along in the sky. Question 5th है, write the main idea of the poem. यानी इस नज्म का मरकजी ख्याल लिखें. The main idea of the poem is about poet's experience of discovering a field of golden daffodils while wandering in nature. The sight of the daffodils bring him joy, and the memory of scene continues to uplift his spirits during moments of solitude or reflection. Do you like this poem? Why? क्या आप इस नज्म को पसंद करते हैं? क्यों? Yes, I like this poem. It beautifully captures the beauty and serenity of nature, as well as the way a simple scene can have a lasting impact on a person's emotions. The imagery and emotions expressed in the poem resonate with many readers and evoke a sense of appreciation for the natural world. Question B है, choose the correct option. First है, I wandered lonely as a cloud. Here I refers to. Option C is the right, the poet. Second है, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. Here they refers to. Option B is the right, they refer किया गया है the daffodils की तरफ. Question C है, the poet could not but be gay in such a jocund company. Here jocund company refers to the option B is the daffodils. Question 4 है, in the first stanza, what was the poet doing? So option A is right. A यानी walking aimlessly. Question 5th है, what wealth the show to me had brought? By wealth the poet means, इसमें जो wealth है उससे क्या मुराद है? Poet means player. So option C is the right. Vocabulary है, A, deduce the meaning of the following words. आपने in
अल्फाजों के मायने अखज़ करने हैं। कंफर्म योर मीनिंग फ्रॉम द डिक्शनरी, आपने डिक्शनरी से इनके मायने आपने कंफर्म करने हैं। ओके, फर्स्ट देख लेते हैं नेवर एंडिंग, ना खत्म होने वाला, यानी हैविंग नो एंड और सीमिंग टू हैव नो एंड, यानी कॉन्टिन्यूस। ग्ली खुशी, ग्रेट डिलाइट और हैप्पीनेस। ट्विंकल जगमगाना, टू emit क्विक फ्लैशेस ऑफ लाइट। स्पार्कलिंग चमकता हुआ, ग्लिटरिंग। ब्लिस एक्सट्रीमली हैप्पीनेस, बहुत खुशी। स्ट्रेच फैला होना, टू एक्सटेंड or spread out over an area. B है can you tell which lines of the poem indicates, यानी कि आप बता सकते हैं ये कौन सी जो लाइन है पोएम की ये बता रही है। A comparison of daffodils with stars, या speakers solitariness to that of a cloud, comparison of daffodils to a crowd of people, comparison of daffodils to dancing human। तो फर्स्ट है comparison of daffodils with stars, continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. Second hai speaker's solitariness to that of cloud. I wandered lonely as a cloud. Third hai comparison of daffodils to a crowd of people when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. Four hai comparison of daffodils to dancing humans, fluttering and dancing in the breeze, tossing their heads in sprightly dance. The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. Question C है which word of the poem means the same as, यानी कौन से अल्फाज पोएम में इन अल्फाज से मिलते हैं। नंबर ऑफ डैफोडिल्स, host, glance, sight, happy feeling, glee, deep thought, pensive mood, blessing, bliss। Next है writing। What is paraphrasing? Paraphrasing क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। Paraphrasing is rewriting the poet's words or ideas in your own words without altering the meanings। Paraphrasing में क्या होगा कि आपने पोइट के अल्फाजों को या उसके आइडियाज को दोबारा से लिखना होगा मगर अपने अल्फाज में, ताकि उसका मायने तब्दील ना हो। A stanza takes the shape of prose, यानी स्टेंजा जो नज्म की जो लाइंस हैं वो फिर नसर की शक्ल ले लेंगी। इट इज अबाउट द सेम लेंथ एज द ओरिजिनल, और इसकी जो लेंथ होगी तो वो ओरिजिनल के बराबर होगी। बिकॉज द पर्पस इज टू रीफ्रेज विदाउट लीविंग आउट एनी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यानी पैराफ्रेजिंग में आप क्या करते हैं कि आप पोइट के यानी शायर के जो अल्फाज हैं या उसका जो आइडिया है उस नज्म में, उसको आप दोबारा से अपने अल्फाजों में लिखते हैं मगर यानी बगैर असल मायने को तब्दील किए बगैर। नेक्स्ट है हाउ टू समराइज अ पोएम, यानी पोएम की समरी आप कैसे उसको लिख सकते हैं। समरी इज पुटिंग डाउन द मेन आइडियाज ऑफ समवन एल्स वर्क इन योर ओन वर्ड्स। समरी में क्या करते हैं आप, उसका आप मेन आइडिया यानी किसी किसी का भी कोई काम है या नज्म है या कोई नसर है तो आप क्या करते हैं उसका आप सिर्फ मरकजी ख्याल अपने अल्फाज में लिखते हैं। जबकि आपने पैराफ्रेज में क्या किया था, पोइट का जो वर्ड्स थे या उसके जो आइडियाज था उसको अपने अल्फाज में लिखा था। मगर यहाँ समरी में क्या होगा कि आपने मेन आइडिया यानी किसी का भी कोई काम है उसका आपने मेन आइडिया अपने अल्फाज में लिखना है। तो असम्बली इज ऑलवेज शॉर्टर देन द ओरिजिनल, ओरिजिनल से ये कम होगी बिकॉज द आइडिया इज टू इंक्लूड ओनली मेन पॉइंट्स ऑफ ओरिजिनल वर्क। इसमें क्या आपने ख्याल रखना होगा, सिर्फ आपने इसमें शामिल समरी में शामिल करने होंगे उसके अहम निकात, एंड लीव आउट द इरेलीवेंट, और जो गैर मुतल्लका चीज होगी उसको आपने छोड़ देना है या तर्क कर देना है। कीप द फॉलोइंग पॉइंट्स इन माइंड व्हाइल समराइजिंग अ पोएम, यानी ये जो पॉइंट्स है आप अपने दिमाग में रखेंगे जब किसी भी पोएम की आप समरी लिखेंगे। रीड द पोएम थॉरली, आपने पोएम को मुकम्मल तौर पर पढ़ना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग, मीनिंग समझेंगे। राइट डाउन द पॉइंट्स, जो अहम पॉइंट्स हैं उसको लिखेंगे। अरेंज द पॉइंट्स इन ऑर्डर, फिर उसकी तरतीब देंगे। फाइंड द कंक्लूजन,
उसको एक कंक्लूड करेंगे, यानी उसका अख्तिताम करेंगे। राइट इट इन प्रॉपर ऑर्डर, फिर उसको उसके सही ऑर्डर में उसको लिखना है। अ समरी इज यूजुअली 1/3 द साइज ऑफ ओरिजिनल, यानी समरी में असल का 1/3 करना है। क्वेश्चन बी है, नाउ राइट द समरी ऑफ द पोएम द डैफोडिल्स। आपने डैफोडिल की, इस पोएम की समरी लिखनी है। राइट अ समरी ऑफ द पोएम द डैफोडिल। द पोएम इज अबाउट अ पोएट who was wandering alone, feeling like a cloud drifting high over valleys and hills. Suddenly, the poet saw a big group of beautiful golden daffodils near a lake and trees. These daffodils were moving and dancing in the wind, just like stars that shines in the night sky. There were so many of them that it seems like thousands were seen at once. The daffodils looked even happier than the sparkling waves of the lake. The scene made the poet really joyful, like being in a happy group of people. Later, when the poet was laying on his bed, sometimes feeling empty or lost in thoughts, the memory of daffodils would come to his mind. It was like a special happiness inside him. This memory would fill his heart with joy, just like dancing with the daffodils. तो ये समरी थी। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। लिसनिंग एंड स्पीकिंग है। डेवलप एंड प्रैक्टिस अ डायलॉग इन ग्रुप टू एग्जिबिट appropriate convention of interruption. आपने तैयार करना है एक मुकालमा ग्रुप में, जिसमें आपने ये जाहिर करना है मुदाखलत की मुनासिब रवायत का। ओके, आपके लिए एक मुकालमा तैयार किया गया है। इसमें दो करेक्टर हैं, आमिर और बाबर। आमिर, हे, हैव यू थॉट अबाउट व्हाट टू डू दिस वीकेंड? बाबर, not really. Any suggestions? Amir, what about going hiking? The weather is supposed to be nice. Babar, oh, I'd love that, but I heard there might be some rain. Amir, you're right. The forecast isn't very clear. Babar, what about visiting the new cafe downtown? Amir, sounds good, but it might be crowded on weekends. Babar, true. Maybe we could go in the afternoon when it's less busy. Amir, or we could try cooking a new recipe at home. Babar, I'm up for that. Do you have any cuisine in mind? Amir, how about trying our hand at making sushi? Babar, it's a fun idea, but I'm not sure if we can find all the ingredients. Babar, right? Let's check the recipe first and then decide. Babar, got it. Let's meet tomorrow to finalize our weekend plan. Amir, sure. Let's aim for noon. I'll send you a message in the morning. बाबर, perfect. Looking forward to it. तो ये था मुकालमा जिसमें हमने मुदाखलत की मुनासिब रवायत को जाहिर किया है। ओके, ग्रामर की तरफ बढ़ते हैं। ए, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल टू फिल इन द ब्लैंक्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल ये हो जाएगी वर्ब प्लस आईएनजी, और पास्ट पार्टिसिपल जो हो जाएगी वो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फर्स्ट है, his dash coat needs mending, tethered. तो A is the right one. Second है, a dash stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. Three है, a lost opportunity never returns. And four is, he kept me waiting. Fifth है, she looked worried. B है, filling the correct participle form. Present participle और पास्ट पार्टिसिपल। आपने इन ब्लैंक्स को प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब प्लस आईएनजी के साथ, या पास्ट पार्टिसिपल जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसके साथ इनको फिल करना है। जैसे, he was sitting in an armchair reading a magazine. सेकंड है, having in the company for many years he knew everyone and everything. तो सेकंड में having। थ्री है, the cup with milk is placed on the table. Four है, dash each other for ages they had a lot to talk about. So, knowing each other for ages they had a lot to talk about.
फिफ्थ है dash into a rich family, she got everything she wished for, born. नेक्स्ट है जी infinitive and infinitive phrase. Infinitive क्या चीज है? Infinitive is base form of verb. ये first form of the verb है, often preceded by to, और ये आती है to के बाद. And infinitive phrase consist of infinitive and related word. और infinitive phrases क्या काम करेंगी, या इसमें क्या शामिल होगा? इसमें infinitive भी होगा, यानी to प्लस verb होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स भी आएंगे. सो अंडरलाइन द infinitive इन ईच सेंटेंस. इसमें आपने अंडरलाइन करने हैं इन्फिनेटिव्स को. जैसे द बस, फर्स्ट है द बेस्ट प्लम्बर टू कॉल इज मिस्टर आमिर. टू कॉल इन्फिनेटिव है, क्योंकि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, कॉल. सेकंड है हिज ओनली एम्बिशन वाज टू सक्सीड एट हिज जॉब. तो टू सक्सीड, तो सक्सीड यानी कामयाब होना. थ्री है ईच ईयर मंसूर ट्राई टू फाइंड मोर डिडक्शंस फॉर हिज टैक्स रिटर्न. तो टू फाइंड infinitive है. To patch the hole in the tire, the mechanics inserted a plug. To patch is infinitive. Fifth है she learned to read कर लें English in coaching academy. तो इसमें infinitive जो होगा to read होगा. Okay, question D देख लेते. Combine the following simple sentences into a single simple sentence by using an infinitive. आपने क्या करना है? आपने combine करना है इन simple sentences को एक में, और उसमें आपने इस्तेमाल करना है infinitive का. जैसे I have engaged a private tutor. He will teach me English. तो इसको एक में तब्दील करना है. तो आंसर होगा I have engaged a private tutor to teach me English. तो to teach ये infinitive हो जाएगा, यानी ये जो दो सेंटेंस थे ये एक सेंटेंस में तब्दील हो जाएगा. नेक्स्ट है to is very weak, he can't walk. तो हम कहेंगे कि he is very weak to walk. 3 है I looked out for the window of my carriage. I wanted to see the green pastures. तो इसका आंसर होगा He looked out of the window of my carriage to see the green pastures. तो infinitive हमने बनाया है to see से. 4 है The proposal is quite unreasonable. It can't be accepted. तो कैसे हम infinitive से एक sentence बनाएंगे? 4 है The proposal is quite unreasonable to be accepted. To be जो है ये इसका infinitive हो जाएगा. 5th है He wants to gain the first position. He works hard for it. तो infinitive कैसे बनेगा? He works hard to gain the first position. तो to gain जो है ये इसका infinitive है, जिसकी वजह से हमने इन दो sentences को एक बनाया है. Next है जी gerund and gerund phrases. gerund और gerund phrases क्या हैं? तो gerund को समझ लेते हैं. gerund ये है is a verb plus ing. gerund जो है verb plus ing है, और इसको हम इस्तेमाल करते हैं बतौर नाउन के. जैसे यहां देखें तो स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज. तो स्विमिंग क्या चीज है? स्विमिंग वर्ब प्लस आईएनजी है, मगर ये वर्ब फॉर्म है, मगर ये इसको इस्तेमाल किया जाता है बतौर नाउन के. जैसे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज. द गर्ल्स एंजॉय स्विमिंग. तो स्विमिंग एज अ सब्जेक्ट आए या ऑब्जेक्ट आए तो ये एज एन नाउन इस्तेमाल हो रही है. द बेस्ट एक्सरसाइज इज स्विमिंग. शी वाज स्कोल्डेड फॉर स्विमिंग, यानी इन सब सेंटेंसेस में जो स्विमिंग इस्तेमाल किया गया है बतौर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, ये एज अ जेरेंड इस्तेमाल किया गया है. gerund and gerund phrases हम समझ लेते हैं. A gerund is a verb form. ये gerund जो है ये verb form है, और ये function इसको इस्तेमाल जो हम करते हैं बतौर noun के करते हैं, और and ends in ing, और इसके आखिर में ing हम लगाते हैं. It is formed by adding ing to base form of verb, यानी verb की first form के साथ हम ing का लगाते हैं. Gerund are used to talk about action, activities or state as noun.
ठीक है। और जेरेंड फ्रेज क्या है? जेरेंड फ्रेज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इंक्लूड्स अ जेरेंड, यानी जेरेंड फ्रेज क्या है? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और इसमें शामिल है जेरेंड भी है, यानी वर्ब प्लस आईएनजी भी शामिल है, एंड अदर वर्ड्स दैट मॉडिफाई अ कॉम्प्लीमेंट, यानी इसके साथ और भी अल्फाज इसके साथ इस्तेमाल किए गए हैं। जेरेंड फ्रेजेस ऑफन एक्ट एज नाउन विद इन अ सेंटेंस, यानी इनका जेरेंड या जेरेंड फ्रेजेस का काम एक ही है, ये एक्ट एज या फंक्शन एज नाउन ही करेंगी। और जेरेंड फ्रेज कंसिस्ट ऑफ जेरेंड एंड रिलेटेड वर्ड, वही बात है जो पहले कर दी गई है। एग्जाम्पल है स्विमिंग इन द लेक। अब देखें, स्विमिंग जेरेंड है, इन द लेक ये उसके साथ रिलेटेड वर्ड्स हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे, जैसे इसको अगर हम फर्स्ट सेंटेंस में देखें या इसको कहेंगे स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग जो है जैसे यहाँ है स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ जेरेंड है क्योंकि ये वर्ब प्लस आईएनजी हमने लगाई है और इसका फंक्शन है एज अ नाउन। मगर यहाँ भी इसका फंक्शन नाउन का ही है क्योंकि वर्ब से ये पहले इस्तेमाल हुई है, मगर ये जेरेंड भी है प्लस इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, इसलिए हम इसको जेरेंड फ्रेज कहेंगे। नेक्स्ट है जी, अंडरलाइन द जेरेंड एंड जेरेंड फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो उसमें जेरेंड या जेरेंड फ्रेजेस देखेंगे जी। स्विमिंग एट बीच इज सेफर देन स्विमिंग इन ओपन सी। तो स्विमिंग एट बीच ये जेरेंड फ्रेज है और स्विमिंग इन ओपन सी भी ये जेरेंड फ्रेज है। सेकंड है जो इज रीडिंग स्टोरीज एट नाइट, तो रीडिंग स्टोरीज एट नाइट जेरेंड फ्रेज है जी। लिविंग स्वाथ changed, ये भी gerund phrase है, and the darkness of the night prevented us from finishing the job, तो finishing the job भी जो है ये gerund phrase इस्तेमाल की गई है, तो इसमें ज्यादातर gerund phrase ही इस्तेमाल किया गया है। So this is an end to this exercise.